Hello my dear kids, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing maths of class 5. This is a book of maths and the name of the book is Joyfull Mathematics. So today we are going to start with chapter number 5, which is multiplication and division. So let's start the chapter. Here you have to complete this multiplication grid. So you have to multiply 23 with 5 and write down the answer. Similarly, 23 by 20 and write down the answer. 23 by 14 and write down the answer. And 23 by 30 and you have to write down the answer. So with this, you have to complete this multiplication grid. So like this, you have to complete this multiplication grid. Similarly, 46 by 5, 46 by 20, 46 by 14, 46 by 30. Now let's move on to the next question. Complete the division grid. आपको division grid को complete करना है. So 60 को हमें 2 से divide करना है और 30 आंसर आ गया. Similarly 60 को जब हम 3 से divide करते हैं, what answer we get? Now 60 को 4 से divide करेंगे, क्या आंसर मिलता है? That we have to write here. And 60 को अब हम 6 से डिवाइड करेंगे, so we get this answer. Similarly, हमें इन नंबर्स को इन नंबर्स से डिवाइड करना है and then fill in the blanks. So this you have to do on your own. Now let's start with multiplication. In our daily life, multiplication plays an important role. In general, multiplication is a repeated addition of numbers by which we multiply the other numbers. Now look at the example given below. Here 5 multiply 4 is 20 because 5 times 4 is 20. अब 5 कितनी बार लिखा है? 4 times. So it's also 20 here. That is 5 multiplied by 4 means 5 is to be added 4 times. 5 को हमें 4 times add करना है तो हमें desired answer मिल जाएगा. The number to be multiplied is called the multiplicand. जिस number को multiply करना है उसे multiplicand कहते हैं. And the number we multiply with, जिससे multiply करते हैं उसे multiplier कहते हैं. And the result is the product. और जो result आता है उसे हम product कहते हैं. Now let's revise the multiplication properties which we have learned in earlier classes. What are the properties? When a number is multiplied by 0, we get 0 as answer. Second property says when a number is multiplied by 1, we get the number as an answer. Now the third property says the product of two numbers does not change when we change the order. अगर दो numbers को हम multiply कर रहे हैं, उनकी position को भी change कर रहे हैं तो भी उनका जो answer है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. Here you can see in this example. Now fourth property क्या कह रही है? Regrouping and changing the order of the numbers. अगर हमने regroup कर दिया, order को change कर दिया, तो भी product पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. Product will be the same, answer will be the same. और इसे ही हम associative property कहते हैं. Fifth property is bigger number can be divided into smaller numbers to multiply easily. Bigger number को हम smaller numbers में क्या कर सकते हैं? Divide कर सकते हैं. और इसे easily multiply कर सकते हैं. It is a distributive property. इसे distributive property कहते हैं. For example, यहाँ पे एक नंबर दिया है 29 जिसे हमें 148 से multiply करना है. तो हमें पता है 100 plus 40 plus 8. तो 29 को पहले 100 से multiply कर दिया, लिख दिया. फिर 40 से multiply किया, यहाँ लिख दिया और फिर 8 से multiply किया, आंसर लिख दिया. अब सबको प्लस करके we will get the answer. Similarly 23 को 96 से मल्टीप्लाई करना है तो 96 का मतलब है 100 minus 4. So 100 से मल्टीप्लाई किया, this is the answer. अब 4 से मल्टीप्लाई किया, this is the answer. दोनों को subtract कर दिया, we get the answer. So let's do this exercise 5.1. Fill in the blanks using the multiplication properties. Multiplication properties को use करना है. So किसी नंबर में अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 आंसर मिलेगा. किसी नंबर में अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं वही आंसर मिलेगा. सिमिलरली किसी नंबर में 0 को मल्टीप्लाई किया वी गेट 0. अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कहती है कि
these two are equal to this. एक नंबर तो लिखा है, दूसरा नंबर हम लिख देते हैं. So दोनों ही नंबर्स की अगर हमने पोजीशन चेंज की, it will not affect the multiplication. Similarly, you have to do the rest of the questions. Now let's move on to question number 2. Find the product by using this distributive law. अब distributive law को यूज करना है और हमें प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है. So this was the distributive law जो अभी हमने पढ़ा है. हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. So 99 को हमें मल्टीप्लाई करना है 107 से. So let's do it here. So 99 multiplied by 100 plus 7. So 99 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया ये 9900 प्लस अब 7 से 99 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. So children, जब हमने 99 से 7 को मल्टीप्लाई किया, we get this answer. This is answer. अब जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, we get the answer 10,593. Here we have done it in this column. So this is our answer. Now let's write it. 10,593. I hope this is clear to you. Similarly, let's do another question here. Let's do this D part. D part को करते हैं. Distributive property we have to use. 90 multiplied by 3000 plus 60 plus 5. अब 19,000 को हम 19 को 3000 से मल्टीप्लाई करते हैं. So 19 multiply 3, it's 57 plus 19 multiply 6 times. So when we have multiplied all these numbers, we get this answer. अब हम इन्हें ऐड कर देते हैं. So it's 57,000 plus 1140 plus 95. So here the answer is 58,235. I hope this is clear to you. Similarly, you have to do the rest of the questions that are given here. Now, multiplication of a number by 10, 100 and 1000 and their multiples. किसी भी नंबर को अगर 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, so what we get? So to multiply a number by 10, 20, 30, 90, we multiply the number by 1, 2, 3 and so अगर कोई नंबर है जिसके लास्ट डिजिट में 0 आ रहा है, so जीरोस को हम हटा देंगे, जो बचा हुआ नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस पर्टिकुलर नंबर को एंड लास्ट में जितने भी 0 है उन्हें हम इंसर्ट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 287 मीन्स 287 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, 0 को रिमूव कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज आंसर, और जितने 0 थे वो हमने ऐड कर दिया. सिमिलरली 3287 को हमें 30 से मल्टीप्लाई करना था, तो हमने 0 हटाया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर इज दिस. अब इसमें हम वापस से 0 को इंसर्ट कर देंगे, सो दिस विल बी द आंसर. नाउ लेट्स learn the second point. The multiple to multiply a number by 100. अगर हम किसी नंबर को 100, 200 या 300 या 900 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वी हैव टू डू. हमें क्या करना है, जो पर्टिकुलर नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है, बाकी जितने 0 हैं वो बाद में हमें लगा देना. सिमिलरली इन द केस ऑफ थाउजेंड्स में अगर कोई नंबर है तो उसमें भी यही करेंगे, हम बस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे गिवन डिजिट को, और जितने 0 हैं वो बाद में हम इंसर्ट कर देंगे. Now let's do this exercise 5.2. Here what number to be added to this? अब आप देख लो कितने 0 हैं, 2 0 है, number is the same, तो हम क्या करेंगे, this is the number जिससे हमें इसे मल्टीप्लाई करना है. Similarly 286 कितने 0 हैं, 4 0, तो 4 0 लगा देते हैं. In this also 89 and how many zeros,
those many zeros we have to insert. 6 zeros are there. Now when we multiply this number with 1, we get 6935 and कितने zero है वो zero हम यहाँ पे insert कर देते हैं. I hope this is clear. Now next, multiply this number by 50. So what we have to do, हमें क्या करेंगे, हम 5 से पहले इन सबको multiply कर देते हैं. So 178 multiply 5. So here the answer will be 890 and कितना zero है 1, तो वो 1 0 हमने add on कर दिया. So this is the answer. Now similarly let's do this D part. 13169 को multiply करेंगे 6. So जब हमने इसे 6 से multiply किया तो the answer will be, so children this is the answer that we get 79014. अब कितने जीरो थे 2, तो ये 2 जीरो हम इसमें insert कर देंगे. So here the answer will be 79,01,400. I hope this is clear. Similarly, you have to find the answer of the rest of the questions that are given here. ऐसे हमें multiply करना है. Now multiplication of large numbers. Large numbers को कैसे multiply करना है? So let's see the example here. We have to multiply 25,000 with 63. So जब भी हमें multiplication करना होता है, पहले हम इस ones वाले digit से जो है multiply करते हैं. तो पहले हमने 3 से इस पूरे नंबर को multiply किया. So 3 is a ones digit. इस पूरे नंबर को multiply किया. This is the answer that we get. अब हम 6 से इन सारे नंबर्स को multiply करेंगे जैसे हम normal multiplication करते हैं, लेकिन उससे पहले 60 से हमने किया है इसको, तो यहाँ पे एक 0 लग गया है. उसके बाद हमने सारे नंबर्स लिखे हैं and then ये जो दो आंसर्स हैं इन दोनों को हमने ऐड किया. So this is the answer. Similarly, this is the number that we have to multiply with 438. So यहाँ पे पहले हमने 8 से multiply किया इन सारे numbers को, we have written. फिर 30 से हम multiply करेंगे क्योंकि 3 tens की place पे है, तो this is the answer. फिर 400 से multiply करेंगे इन सारे number को क्योंकि 4 is at the 100th place. तो जब हमने इसे multiply किया, this is the answer. अब इन तीनों को हम add कर देंगे. So जब हमने इन्हें add किया, this is the answer that we get. Let's do this exercise 5.3. पहले हम 2 से इन सबको multiply करेंगे. So children, when we have multiplied these two numbers or add करने के बाद we get this number as our answer. I'm going to write it here. It's 2 crore 29 lakh and 5,900. So this is the answer that we get after multiplying these. Now similarly you have to do the multiplication of these two numbers. Now let's find the product. Product find out करने के लिए we have to arrange them like this. Let's multiply this first one. It's 19,310 multiplied by 62. So पहले 2 से सबको multiply करेंगे, फिर 60 से multiply करेंगे सब numbers को. Now we are going to add. So children, this is the answer, 11,97,220. So this is the answer of this question. Now let's multiply this number. Let's do this C part. Let's do question number C. Similarly, you have to find out the answer of the other. When we multiply 1 with all the numbers, we get the same numbers. So let's write it. Now let's multiply with 50. Now let's multiply all these numbers with 600. So 600 से multiply करते हैं. So उसके लिए पहले 2 0 लगा लेते हैं, अब 6 से multiply कर देते हैं. Now let's add all these numbers. So I'm adding it here. So children, this is the answer. It's 11 crore 95 lakh 9,929. I hope this is clear to you. Like this, you have to complete the rest questions that are given here.
Now let's move on to question number 3. Find the product and express the result in words according to the Indian number system. So let's do this question number B. I'm going to do only one, rest you have to do on your own. So let's do this B question. So here the number is 896340 multiplied by 323. So पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, now 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, now again 300 से मल्टीप्लाई करेंगे. Now let's add these numbers. So children, this is the answer that we get. So here the answer is, so it's 28 crore 95 lakhs 17,820. Now children, let's learn word problems. Here first example is given. If the cost of a necklace is rupees 6,12,931, what will be the cost of 416 such necklaces? So let's find. यहाँ पे जो कॉस्ट दिया गया है एक नेकलेस का, अब पूछा जा रहा है कि एक का कॉस्ट दिया गया है, ज्यादा का कॉस्ट निकालना है. सो जब हमें ज्यादा का चीजें निकालनी होती है, इन दैट केस वी ऑलवेज मल्टीप्लाई. लेकिन जब ज्यादा दिया हो और एक निकालना हो, इन दैट केस वी डिवाइड. So here we are going to multiply this total amount with this 460. अब हमने जब इन्हें मल्टीप्लाई किया 6 से, पहले ऊपर के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, देन दिस इज द आंसर. 1 से फिर सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 1 मीन्स 10 से मल्टीप्लाई किया, अगेन हमने 400 से मल्टीप्लाई किया बाकी नंबर्स को. सो दीज आर द आंसर्स. अब इन्हें हमने जब ऐड किया, दिस इज द आंसर. सो द कॉस्ट ऑफ 460 necklaces is 25 crores 49 lakhs 79,296. So similarly, let's start this exercise. Exercise number 5.4. A factory employs 150 workers. एक फैक्ट्री में इतने वर्कर्स हैं जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं. A worker's salary is this much per month. एक वर्कर की सैलरी 2,000 रुपए है पर मंथ, एक महीने की. Find the total amount paid to the Find the total amount paid. Salary by the factor in 1 year. अब एक साल की सैलरी पूछी जा रही है, तो सबसे पहले हम इन जो वर्कर्स हैं इनकी सैलरी निकालते हैं 1 मंथ की. सो यहाँ पे टोटल रुपीज है 2685. इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 से. So let's multiply it. So this is the salary that the workers get in 1 month. अब 1 मंथ की सैलरी हमें पता चल गई. अब हमें क्या करना है, बाकी की 12 मंथ्स की मींस 1 ईयर की सैलरी निकालनी. सो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स. तो 12 मंथ से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे. सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 12. सो हियर चिल्ड्रन, व्हेन वी मल्टीप्लाई, आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस and 150 workers, we get the salary of 1 month. अब 1 मंथ की सैलरी के बाद हमने 12 months मीन्स 1 ईयर की सैलरी निकाली है, तो उसके लिए हमने जो आंसर था हमारा उसे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो हियर द आंसर इज 4833, which means 48,33,000. I hope this is clear. Now let's do another question here. Let's do this fourth one. In a factory, there are total these many toys are produced daily. एक फैक्ट्री है जहाँ पे इतनी टॉयज को डेली प्रोड्यूस किया जाता है. How many toys will be made in 24 working days? So एक दिन में जब इतनी टॉयज हैं तो 24 डेज में कितने टॉयज होंगे? तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर नंबर को हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे. So let's multiply this number with 24. So children, on multiplying we get this answer. Answer is 56,58,960. So which is 56,58,960. Similarly, let's do this 7th question. What is the product of the largest
4-digit number and the largest 2-digit number. So यहाँ पे पूछा जा रहा है कि largest 4-digit number जो है क्या है वो? Its largest 4-digit number is 9, 9, 9 and 9. And largest 2-digit number. Largest 2-digit number is 9, 9. So अब हम जब इन्हें multiply करेंगे, we will get the answer. So children, on multiplying these two numbers, we get the answer is 9,89,901. Now let's do this question number 10. A man earns 5,500 rupees, 5,550 rupees per month. एक महीने में एक मैन है, उसने इतने पैसे कमाए. How much will he earn in 2 years? So 2 years में कितने months होते हैं? There are total 24 months. 12 multiply 2 is 24. So 24 months में हमें निकालनी है कि कितनी उसकी salary है. So let's multiply it. So this is the amount that he earns in 1 month. अब 24 से इसे जो है multiply कर देते हैं. So the amount that he gets is 1,33,200 rupees. So this is the amount that he gets. Similarly, children, you have to do the rest of the questions that are given here. Now let's learn division. We know that division is equal distribution of a given quantity. किसी भी चीज को equally बांटना ही division कहलाता है. The number to be divided is called the dividend. जिस number को divide करते हैं हम उसे dividend कहते हैं. The number which divides is called divisor. और जो number divide कर रहा है उसे हम divisor कहते हैं. The answer is the quotient and the remaining that is left at the end is called the remainder. So this is a divisor. This answer is a quotient. The number to be divided is dividend, and this whatever remains is your remainder. Now let's learn the properties of division. When a number is divided by 1, अगर किसी भी number को 1 से divide करते हैं तो क्वेश्चन क्या आएगा? वो same number. When a number except 0 is divided by 2, अगर किसी नंबर को खुद से डिवाइड करेंगे 0 के अलावा तो आंसर विल बी 1. थर्ड प्रॉपर्टी सेज व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर. जब 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं एक्सेप्ट 0, द क्वोशिएंट इज ऑलवेज 0. सो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 को हमने इस नंबर से डिवाइड किया तो यहाँ पे आंसर क्या है? 0. फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविजन. So this is the division algorithm. So अगर हमें जो है इनमें से कोई भी चीज निकालनी है, we use this formula. हम क्या करते हैं? Divisor multiply quotient और रिमाइंडर को अगर हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे we will get this dividend as the answer. So for example here 345 is given and it is to be divided by 12. 12 से डिवाइड करने के बाद we get 28 quotient as quotient and 9 as remainder. अब इस फॉर्मूला में हमने इसे डाल दिया है तो क्वेश्चन था हमारा 28, डिवाइजर था 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 336 और रिमाइंडर था 9. 9 को प्लस करने पे we get 345. डिवीजन बाय 1000 and 100. 1000 और 10,000 में कैसे हम डिवाइड करते हैं? So when a number is divided by 1000, जब किसी भी नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं, we simply remove the last 3 digits to get the quotient. हम लास्ट के 3 डिजिट्स को हटा देते हैं और हमें क्वोशिएंट मिल जाता है. फॉर एग्जांपल 5637 है, इसे 1000 से डिवाइड करें. 1000 में कितने 0 हैं? 3. तो पीछे से 3 डिजिट्स को हटा देंगे हम. जितने 0 उतने डिजिट्स हट जाएंगे. सो उन डिजिट्स को हटाने के बाद क्या बचता है? 5. 5 हमारा क्वोशिएंट है, बाकी बचेगा हमारे रिमाइंडर है. टू डिवाइड अ नंबर बाय 10,000, किसी भी नंबर को 10,000 से अगर हम डिवाइड करते हैं we simply remove the last 4 digits. हम क्या करते हैं? लास्ट के 4 digits को हटा देते हैं to get the question. The last 4 digits form the remainder और the last के जो 4 digit हैं वो रिमाइंडर बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, इसे 10,000 से डिवाइड करना है तो 10,000 में 4 zeros तो पीछे से 4 नंबर्स को हटा दिया हमने तो क्या बचा? 3. तो 3 हमारा क्वेश्चन है, बाकी बचे हुए हमारे रिमाइंडर है. So like this, let's do this exercise 5.5.
Here, जब भी हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, we get the answer as 1. Similarly, किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे, we will get that number as the answer. 0 से अगर किसी नंबर को करेंगे, we will get 0. Now, second question. Find the number which when divided by 45 gives the equation 25 and remainder 9. ऐसे नंबर को ढूंढना है जिसे 45 से डिवाइड किया जाए तो क्वेश्चन 25 आएगा और रिमाइंडर 9 आएगा. तो ऐसे केस में क्या करना है, हमें वो फॉर्मूला लगाना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. सो ऐसे नंबर को हमें फाइंड करना है, दिस नंबर इज टू फाइंड, जिससे हम जब जो है बाकी चीजों को उनकी जगह पे लगा देते हैं. सो दिस इज आवर डिवाइजर. सो अब हम इसे 109 को अगर 45 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट दिस आंसर. लेट्स चेक इट. 109 को हम 45 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 टाइम्स करते हैं. सो 2 टाइम्स 90 विल कम. नाउ 19 आ गया हमारा आंसर. चिल्ड्रन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन. हियर डिविडेंड is equal to divisor multiply quotient plus remainder. So यहाँ पे हमारा divisor है 45, multiply quotient है 25 plus remainder है 9. So अब हम 45 को 25 से multiply करते हैं. So we get 1125 plus 9. So here the answer is 1134. So अब हम इस नंबर को चेक करते हैं. लेट्स डिवाइड दिस नंबर एंड चेक कि क्या वी गेट दीज एज क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. सो इस नंबर को हम डिवाइड करते हैं 45 से. सो 45. सो चिल्ड्रन, आफ्टर डिवाइडिंग दिस वी कैन सी वी गेट 9 एज रिमाइंडर एंड 25 एज क्वेश्चन. सो आवर नंबर इज 1134. Similarly, we have to do the next question. When this number is divided by a certain number gives 29 as a question. So इस नंबर को हम एक नंबर से डिवाइड करना है जो एक क्वेश्चन देता है. तो इसमें भी आपको सेम चीज करनी है. यहाँ पे आपको डिवाइजर इज ऑलरेडी गिवन. दिस नंबर इज गिवन which means dividend is given. डिविडेंड है 4904. वी गेट दिस एज क्वेश्चन. डी हमें फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन है 29 प्लस 3 एज रिमाइंडर. तो इसमें हम क्या करेंगे, जो है डी को हम यहीं पे लीव करेंगे और मल्टीप्लाई 29, 3 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे. सो 4904 minus 3 and divided by 29. So we are going to get 4901 divided by 29. So अब हम इन numbers को जब हम divide करते हैं, we get 4901 divided by 29. Let's see. So it's 6 times 174. So here this is a number. Divisor is 169. So like this you have to do these 2 questions that we have done. Now let's move on to question number 4. Find the question and reminder. Question और reminder हमें दोनों find out करना है. So here the first number is 4137. इसे डिवाइड करना है हमें 1000 से. कितने जीरो हैं? 3 जीरो. सो लास्ट के 3 नंबर्स हटा देंगे. जो बचा हुआ नंबर है वो हमारा क्वेश्चन है, बाकी नंबर्स हमारा रिमाइंडर है. सिमिलरली लेट्स डू द सी पार्ट. कितने जीरो है? 4 जीरो. पीछे के 4 नंबर्स हटा देंगे. 2 इज आवर क्वेश्चन एंड बचे हुए जो नंबर्स हैं 5790, ये है हमारे रिमाइंडर. So similarly, you have to do the rest of the questions. Now, let's learn division of large numbers. Large numbers को कैसे divide करना है? Division by 2-digit number.
We have learned about division by 2-digit number. Let's revise. So 2-digit number का हमने division पढ़ लिया है. Let's revise कैसे हम करते हैं उसे. And also we have to verify our answer. So verification I taught you. 32 का हमें जो है इस नंबर को 32 से डिवाइड करना है. So on dividing we get 2182. अब हमें चेक करना है. So dividend is equal to divisor multiply question plus reminder. अब जो है यहाँ पे divisor था हमारा 32, question था 2182 plus 2. So we get 69826. So this and this number both are the same number. So this means that our answer is correct. Now how can we divide by 3-digit number? 3-digit number से कैसे divide करते हैं? You have to divide this number by 3-digit number and also check. अब 3-digit number से हमने divide किया 1 times लिया, 3 digit यहाँ से भी लिए, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 9 विल कम. सेम मल्टीप्लिकेशन करना है, सेम डिवीजन करना है दैट जो हमने पहले करा था, बट यहाँ पे डिजिट्स बढ़ जाती हैं. सो सेम मेथड वी हैव फॉलोड इन डिवाइडिंग, एंड ऑन डिवाइडिंग वी गेट 12635 एज क्वेश्चन एंड रिमाइंडर एज 125. अब हमें चेक करना है तो हम इन सारी वैल्यूज को इन जगहों पे लगा देंगे एंड वी गेट दिस सेम नंबर एज आ डिविडेंड. सो दिस इज आल्सो करेक्ट. Now let's move on to exercise number 5.6. So children, here the first question is find the quotient and check the answer in case each of the following. So I'll be doing 2, rest you have to do on your own. Let's do this one. So we have to divide 30845 by 7. So let's read this table of 7. 28. Again 8 will come. Now it's 0 here जब हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया. अब 4 नीचे आएगा यहाँ पे. चिल्ड्रन क्या 4 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं? नो, क्योंकि 4 नीचे आया है और वो डिवाइड भी नहीं हो पाया, इसलिए हमें यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा. अब जो है इसके बाद हम न्यू नंबर उतार सकते हैं नीचे. नाउ अगला नंबर हमने नीचे लिख दिया है. सो हियर द क्वेश्चन इज 4406 and the remainder is 3. Similarly, let's do this F question. Question number F. Question number F is 520386 divided by 4. अब आप देखो कि आपने यहाँ पे से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 आंसर आ गया. अगला नंबर क्या है? 0. वो डिवाइड नहीं हो सकता तो यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा. फिर अगला नंबर है 3. क्या ये डिवाइड हो सकता है 4 से? नहीं, फिर एक और 0 लगाना पड़ेगा. फिर अगला नंबर है 8. अब ये डिवाइड हो सकता है. नेक्स्ट नंबर इज 6. सो हियर चिल्ड्रन वी गेट 130096 एज द क्वेश्चन and the remainder is 2. Similarly, you have to complete the rest of the questions that are given here. Now let's move on to question number 2. Find the quotient and the remainder of the following questions. Also verify your answer. यहाँ पे भी हमें आंसर्स को चेक करना है और क्वेश्चन एंड रिमाइंडर भी फाइंड आउट करना है. सो लेट्स डू इट. लेट्स डू दिस A part first. So the question is 67892 divided by 74. So 6 तो नहीं जाएगा, फिर 67 भी नहीं जाएगा, फिर 678 को हम लेंगे. So let's do it. So 74 9 times करके देखते हैं. So yes, it will go 9 times. So when we multiply it by 2, we get 148. So it will not go. So we will have to write it 1 times. So quotient is 917 and the remainder is 34. I hope this is clear. Now let's move on to another question. Let's do this I part. 853 and 743 is divided by 41. So here the quotient is 20823
and the remainder is 0. I hope this is clear. Similarly, you have to do the rest questions of this part on your own. Now let's move on to question number 3. Find the quotient and the remainder in the following and check your answer. So check भी करने को यहाँ पे कहा है, हमें फॉर्मूला में डालना है children, and then we can check it like we have done it before. So let's do this one first. The number is 3097 and it is to be divided by 371. So 371 से बड़ा नंबर लेंगे, उससे छोटा हम नहीं ले सकते. So इन तीनों को मिला के हो गया 309 जो कि एक छोटा नंबर है. तो हम लेंगे 3097. So it's 129. 129 is smaller, so next number will come here. Next number is 1. So let's check it. 371 multiply by 3. Let's do it. So it will go 3 times. It's next 178 is here. This one will come down. Now let's check it. It will not go 5 times. It will go 4 times. So 4 times it is 1484. Now 297. Ab ye 2 will come here. So it will go 2972. It will go 8 times. So 2968. So 4 is our remainder, children. And this is our quotient. So quotient is 8348 and the remainder is 4. I hope this is clear. Like this we have to complete the rest of the questions that are given here. Now let's move on to the next question. Find a dividend if divisor is this, quotient is this and the remainder is this. So dividend का formula है is equal to divisor. In this question you have to check also your answer. So here divisor into quotient plus remainder. So divisor दिया गया है 321 multiply quotient है 1234 and remainder is 46. So after solving this we will get the dividend. Let's solve it. So 1234 multiply 321. So this is the answer 396114 plus 46. So on adding this we get 396,160. So this is the dividend. I hope this is clear. Now fifth question says what will be the value of the quotient and the remainder of the dividend and the divisor is this. अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और डिविडेंड और डिवाइजर दिया गया है. सो सेम इसी प्रोसेस से हमें डिवाइड करना है. हमें जो है ये दिया गया है और डिवाइजर दिया गया है. हमें जो है क्वेश्चन और रिमाइंडर को निकालना है. तो हमें जो ऐसे 425 को हमें डिवाइड करना है 563 247. So we will get this quotient also and remainder also. So this you have to do on your own, children. Now let's do some word problems. A factory produces these many bulbs in a year and 576 bulbs are packed in a carton. एक कार्टून में इतने bulbs आ सकते हैं. How many cartons are required to pack the bulbs produced in that year? कितने कार्टन्स की जरूरत है बल्ब्स को पैक करने के लिए? सो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ बल्ब्स आर गिवन
और एक कार्टन में जितने भी बल्ब्स आते हैं वो लिखें, दोनों हम डिवाइड करेंगे. We will get the number of cartons that are required. So these are the number of cartons that are required. Next question is, a man covers these many kilometers and meter by car in 273 days. So एक man ने इतने किलोमीटर और मीटर को कवर किया इतने डेज में. How far will he travel in 145 days? So जब इतने डेज में इतने दिन किलोमीटर गया तो 145 डेज में वो कितने किलोमीटर जाएगा? So that you have to find. तो टोटल हमें डिस्टेंस लिख दिया है. अब इस टोटल डिस्टेंस को नंबर ऑफ डेज से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 डे का आपको मिल जाएगा कि 1 डे में उसने कितना दूर ट्रेवल किया. सो अब जब 1 डे का हमें मिल जाएगा उसे हम 145 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 1 डे का था 235 किलोमीटर एंड 195 मीटर. अब इसे 145 से हमने मल्टीप्लाई किया. सो वी गेट दिस आंसर. सो द मैन ट्रेवल्स 34,103 kilometer and 275 meter in 145 days. Now let's do some exercises. Exercise number 5.7. Let's do some word problem here. Let's do this first question. 68 people can travel in one bus. तो एक बस की बात हो रही है, एक बस में 68 people हैं. How many buses will be needed for these many people? So हम क्या करेंगे? 68 से इसे डिवाइड कर देंगे. So 68 से let's divide this number. 68 2 times, 68 3 times, क्योंकि हमें ये 3 नंबर लेने होंगे. So we get 8 times. So here the answer is we need 28 buses. So 28 buses are required for these many number of people. Now let's do another question here. Let's do question number 6. So question number 6 is, find the least number that should be added to this number. So कौन सा नंबर है जो इस नंबर पे ऐड किया जाए so that the result is exactly divisible by 456. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस नंबर में कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे कि उसे हम डिवाइड करेंगे तो इससे पूरी तरह से डिवाइड कर जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा. So let's divide it by 456. Children, let's do this fourth question. The product of two numbers is this. दो numbers हैं, उनका product जब उन्हें हम multiply करते, product means multiply. So दो numbers को multiply करने पे we get this answer. So let the number be A multiply B. तो आंसर क्या आएगा? 154,344. Now if one of them is 236, तो एक नंबर अगर ये है, what will be the other number? So हम इस केस में क्या करेंगे? A को फाइंड आउट करने के लिए we will divide 236 को हम इस नंबर से डिवाइड कर देंगे. Let's divide it. 236 and 154,344. It's 944. So the number is 654. I hope this is clear. Similarly, children, you have to do the rest of the questions that are given here. Understand it carefully and complete it. And with this, we have completed the chapter. I hope that you have understood it. And I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay rated.